और अच्छा अच्छा चले start. Thanks, రావట్లేదు అంటున్నాను ఇక్కడ ఓకే ఓకే దిస్ ఐ హోల్డ్ లైక్ దిస్ नहीं ल गिर जा रहा ఇది ऑन ही चाहिए ऑफ कर दो नॉट गेटिंग फिट तो भी यही पर रखना है हाँ यहाँ पे गाड़ी पे गिर जा रहा है इसका वेट ज्यादा है ना अच्छा ओके इफ यू कैन डू दैट नो प्रॉब्लम थैंक यू ऑन करें इसको या इट्स ओके नो प्रॉब्लम तो ऑन करें Good morning, everyone. Welcome back to our chemistry class for advanced supplementary. So yesterday we have started with the important LAQs. In that I have completed the Bohr's model and hydrogen spectrum, which is considered to be the most important LAQ. So after that I started quantum numbers. So yesterday I was able to do only 2 quantum numbers. So that is first one is the principal quantum number and azimuthal quantum number. And today we'll discuss the magnetic quantum number. So what are the various quantum numbers? Quantum numbers. So the 4 quantum numbers, principal, we'll just recap, principal quantum number, then second, azimuthal quantum number, azimuthal quantum number, the third one, magnetic quantum number, and the fourth one is the spin quantum number. Okay, so we have done the first, second and third, fourth. Today we will discuss. Now, magnetic quantum number. This was proposed by whom? This was proposed by Landé. Magnetic quantum number was proposed by the scientist Landé and is denoted by the symbol Ml. Now, what are the values of Ml? So this is minus L, 0 to plus L.
The values of magnetic quantum number are minus L, 0 to plus L. Now, what is the significance of this quantum number? It will tell you about orientation of orbitals. It will explain about orientation of orbitals. Okay. Now, not only that, it also explained the Zeeman effects. Zeeman effects. What is the meaning of Zeeman effect? So, when you pass magnetic field into the spectral lines, the splitting of spectral lines will take place, and that is called as Zeeman effect. So, this quantum number, it was proposed by the scientist Landé. It is denoted by the symbol ml. The values of ml are minus L, 0, plus L. What is the significance? Orientation of orbitals, and it has also explained the Zeeman effect. Then the last quantum number is the spin quantum number. So it was proposed by Uhlenbeck and Goudsmit. Okay. So the simply smallest you can write here this S, the values of SIL are plus half minus half. So plus half indicates the clockwise rotation of electron, and minus half denotes the anti-clockwise rotation of the electron. So this is about the quantum numbers. So the quantum numbers answer here in your material, it is given in the form of box also. In the beginning of the chapter, it is given in the box also. Box form, that also you can write. If you feel that is simple, you can write that answer also. But the thing is, you need to write the introduction. Introduction के 2 मार्क है. So वो introduction part जो लेंदी आंसर में introduction दिया गया, वो introduction लिख के और वो tabular column लिख सकते हो. Or else, if you can write this whole answer in detail, you can go with that answer. Okay, students. So with this, we have completed the first group, first chapter, LAQs. That is the Bohr's theory, hydrogen spectrum, and quantum numbers. The next, we'll go to second chapter, that is periodic classification. Periodic classification. Here, we have got 3 questions. First one is ionization enthalpy. The question on ionization enthalpy. So what is this question? What is IE1, ionization enthalpy 1, and IE2? What is ionization enthalpy 2? Then why IE2 is greater than IE1? Then we have to explain the factors. आपके क्वेश्चन जितने बिट्स में है, yesterday I told you, जितने बिट्स में आपका क्वेश्चन रहता, you have to write the answer in that parts only. Then second question being the classification of elements. Classification of elements into SPD blocks. SPDF blocks. Okay. The next question is periodic properties. The next question from this chapter is periodic properties. Now, so this question you may get for 4 marks, you may get mark for 4 marks, or you may get for 8 marks. You may get for 4 marks or 8 marks. Now, if it is given in the 4 marks, how will they give? They will ask only 2 properties. They will ask 2 properties. If they are giving in the 8 marks, they will ask 4 properties. Is it not, student? Is that clear? Okay. अगर 4 marks में दिया गया है question, they will ask any 2 properties like ionization enthalpy, electronegativity. Or if it is given in the 8 marks, they will all ask 4 properties. What are that? Atomic radius, ionization enthalpy, electronegativity, electron affinity. These are the 4 important properties. Okay. So these are the questions which we are going to get from periodic classification. How many marks? 8 marks question. 1 question you will get out of these 3. 1 question. Okay. So now we'll discuss each one by one. First, what is IE1 and IE2?
while IE2 greater than IE1. What are the factors? What are the factors which affects ionization enthalpy? Now, what is the meaning of IE? IE का मतलब क्या है? Ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Now, what is this ionization enthalpy? Take one neutral atom. What is the meaning of neutral atom? What is neutral atom? The number of electrons is equals to number of protons. This is called as neutral atom. Okay. Now, suppose think that if you want to remove one electron, you want to remove the electron from outermost orbits. You want to remove an electron from outermost orbit. Now, outermost orbit में electron कैसा रहता? So this electron will be loosely held. Electron is loosely held. मतलब उसपे न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है. सॉरी, डिस्टेंस ज्यादा है एंड इट इज मोर ओवर इट इज अ न्यूट्रल एटम. सो इलेक्ट्रॉन जो है लूजली हेल्ड रहता है, मींस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम रहता है. नाउ इफ यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, कौन से स्टेट में आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो? लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट. इन गैसियस स्टेट अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है या ऐड करना है तो आप कौन से स्टेट में कर सकते हो? गैसियस स्टेट में. नाउ क्योंकि आपको कम एनर्जी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है लूजली हेल्ड है, उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा? मिनिमम, कम से कम मिनिमम एनर्जी. सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, okay, so outermost or loosely held electron from a outermost gaseous neutral atom is called ionization enthalpy. The minimum energy very very important as students. Minimum energy, I'm erasing this part. The minimum energy required to remove outermost loosely bound electron from a gaseous neutral atom, okay, this is called as ionization enthalpy. क्योंकि आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, so therefore it is called as ionization enthalpy 1. Now, how you represent this in the form of an equation? Suppose assume you have taken one metal I am representing by letter M. So metal को कौन से स्टेट में लिया गया? गैसियस स्टेट में, क्योंकि आप गैसियस स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो या ऐड कर सकते हो. वन मोर थिंग बॉयज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे राइट लाइक दिस. यू शुड नॉट राइट लाइक दिस. दिस इज नथिंग बट सिंबल फॉर मैग्नीशियम मेटल. इज इट नॉट स्टूडेंट्स? यहाँ पे वी आर नॉट टेकिंग मैग्नीशियम, वी आर नॉट टेकिंग मैग्नीशियम, वी आर जस्ट टेकिंग एनी मेटल, वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय लेटर M. तो आपको G जो है नीचे लिखना है, सबसे नीचे, M के बाजू नहीं लिखना है. यू आर नॉट सपोज टू राइट बिसाइड M, ऐसा नहीं लिखना है, M के नीचे लिखना है. ओके, प्लीज डू रिमेम्बर दैट. प्लस यू आर सप्लाइंग एनर्जी. एनर्जी किस लिए सप्लाई कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या बनता? आयन बनता. सो दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1. तो क्या होता? यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए. पहले क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स.
अभी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, तो वन प्रोटॉन इक्वल्स टू वन पॉजिटिव चार्ज, तो जी नीचे लिखना है प्लस वन इलेक्ट्रॉन. Okay, so the minimum energy required to remove outermost loosely bound electron from a gaseous neutral atom is called ionization enthalpy 1. So आपको यहाँ पे क्या बन रहा है, you are getting unipositive ion. You are getting unipositive ion. What is the meaning of unipositive ion? Uni मतलब one, positive मतलब positive charge. तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज का आयन बन रहा है. Okay, boys, so students, so you should never write in this form. This is wrong. So this indicates magnesium metal. We are not taking magnesium metal. We are just representing a metal which can donate electron in the form of M. That's it. So G जो है आपको M के नीचे लिखना है, M के बाजू बिल्कुल भी नहीं लिखना है. Okay, students, please do remember that. Come on, copy down this. Please copy down this. Okay, students, completed. The next. Second bit क्या है क्वेश्चन का, ionization enthalpy 2. Ionization enthalpy 2. So here what we are taking, so we are taking the unipositive ion. Okay, so unipositive ion, for example, metal in the gaseous state, unipositive ion. Here we are taking the metal in the gaseous state, unipositive ion we are taken. To this we are supplied energy, IE2, and we are getting a dipositive ion. We are getting a dipositive ion plus one more electron is given out. Okay, so here the minimum energy required to remove the second electron or from a unipositive ion, the minimum energy required to remove electron from unipositive ion to get a dipositive ion. This energy is called as ionization energy 2. So what is the definition? The minimum energy
required to remove an electron from a unipositive ion. Is called, to give dipositive ion is called ionization enthalpy 2. Copy down this. So from unipositive ion, when you are removing the second electron, you are getting a dipositive ion. I'll write this once again. M. Okay. The definition for ionization enthalpy 2. So always try to highlight this equation, students. When you write the answer, try to highlight this equation by placing this in the box, so that the people who are going to correct your paper, so just by seeing this, they will get the idea that you have written the correct definition. They don't go in detail. So they also want to do the work in the shortcut way. So you please highlight this equation. Okay. Is that done? The next. Y. The next bit क्या था? Y. IE2. IE2 is greater than IE1. Ionization enthalpy 2 IE1 से ज़्यादा क्यों है? Now look at here. So first you are taking the neutral atom. So what is neutral atom? Number of electrons are equals to number of protons. Okay. So in the neutral atom, what is happening? The nuclear attraction. So the nuclear attraction or nuclear charge is less. Nuclear attraction or nuclear charge is less. So therefore, less energy was required to remove the electron. But when you take the unipositive ion, in unipositive ion, the number of protons are more than number of electrons. Or number of protons we can also call in terms of nuclear charge. So unipositive ion में क्या हो रहा है? Nuclear charge बढ़ गया. मतलब nucleus का attraction outermost electron पे बढ़ गया. So when nuclear attraction increases, so if you want to remove the electron, you have to break this nuclear attraction. आपको nuclear attraction को break करना पड़ता, वो force को तोड़ना पड़ता, क्योंकि ज्यादा attraction है तो ज्यादा energy की जरूरत पड़ेगी. So in unipositive ion, due to more nuclear charge, so more energy is required to remove the electron. देखो, in unipositive ion, more nuclear charge, more nuclear charge acts on outermost electron. Hence, more energy is required. Thus, IE2 is greater than, IE1. This is the reason. इतना लिखे तो काफी है स्टूडेंट्स, आपको ज्यादा लंबा करके लिखना नहीं है. मेन रीजन क्या है वो लिखे तो काफी है. तो यहाँ पे क्या है, यूनिपॉजिटिव आयन में क्या हो रहा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया. किस पे? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे. तो उसकी वजह से आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता. So therefore, so IE2 is greater than IE1. Please write down this.
completed. So first we have seen ionization enthalpy 1. What is that? Minimum energy required to remove outermost loosely bound electron from gaseous neutral atom. This is ionization enthalpy 1. तो आपको इसको हाईलाइट करना है स्टूडेंट्स. जब आप आंसर में लिखते हो इसको हाईलाइट करो, बॉक्स में डालो, राइट? द नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वी हैव सीन आयनाइजेशन एंथैल्पी 2. Okay, so this is the reason. So why IE2 is greater than IE1? Okay, so यूनिपॉजिटिव आयन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहता, उसके वजह से आपको ज्यादा एनर्जी डालना पड़ता इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, राइट? द नेक्स्ट विल कम टू द factors affecting the ionization enthalpy. Factors affecting the ionization enthalpy. What are the factors that are going to affect the ionization enthalpy? First factor, we see atomic radius. First factor is atomic radius. Okay. Then second one, nuclear charge. Nuclear charge, मतलब attraction of nucleus. Then third, screening effects. Screening effects. Then fourth, penetration power. मतलब जोन से extent पे orbitals present है. Penetration power. Then fifth one, completely filled or half filled. Completely filled or half filled electronic configuration. So these are the factors we are going to discuss now. Please copy down this. These are the 5 factors. Sometimes they will ask you to write any 3 factors. मतलब आप ये दो नहीं लिखना students, क्योंकि दो छोटे-छोटे आप लिखे तो marks नहीं आते. If it is mentioned in the question, write any 3 factors. You are supposed to write the first 3. If they don't mention, just write the factors affecting ionization enthalpy means you have to write all the factors. Okay, that is must. Any 3, matlab first 3 factors you have to write. Write on fast. Done? The next, atomic radius. What is the meaning of atomic radius? Suppose, assume that this is the atom. Okay. Now, so the distance from center of the atom to the outermost orbit or till the electron cloud. जहाँ तक electron रहता या till outermost orbit also you can define as the atomic radius. The distance from the center of the nucleus to the outermost orbit is known as atomic radius. Now, suppose we'll say 2 cases. First, we'll try to remove the electron from here. Okay, we'll try to remove electron from here. Suppose some energy is required, IE1, right? Then next take another neutral atom. Don't take it as unipositive ion. Don't think that because first you have removed electron, so next electron means it is unipositive. Don't think in that way. Take 2 cases. In the first case, this is the atomic radius and we have removed electron from this. In the second case, suppose this is the atom. So this is the outermost electron of this atom. From this, we are going to remove the electron. So look at the radius. यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक. Suppose you think this, take this as x, this as y. Okay, which is greater? So x is greater than y. Is it not, students? The distance यहाँ पे ज़्यादा है compared to here. Okay, so therefore the energy required as the distance increases, what happens to attraction of the nucleus? Decreases. Nuclear charge
डिक्रीजेस। जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज होता, तो आपको ज्यादा एनर्जी डालना पड़ता या कम एनर्जी, लेस एनर्जी। मतलब एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। मतलब जैसा डिस्टेंस इंक्रीज होता तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा। जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा तो आपको लेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसा डिस्टेंस बढ़ता, एटॉमिक रेडियस बढ़ता, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता, सो एनर्जी भी कम हो जाती रहती, राइट? So these two are inversely proportional. The next is the nuclear attraction. What happens to nuclear attraction? Nuclear attraction क्या होता है? So two cases are there, the same way which you have taken in the first case. So this is the okay. So second case too, you have to remove the electron from here. तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, सो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है क्या होता है, आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। मतलब एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, मींस जैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे तो क्या होता, तो आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता टू ब्रेक दैट न्यूक्लियर अट्रैक्शन। मतलब this ionization enthalpy is directly proportional to nuclear charge. जैसा जैसा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा आपको ज्यादा एनर्जी डालने की जरूरत पड़ेगी। The next is the screening effect. What is the meaning of screening effect? The other name for screening effect is also called as shielding effect. Screening effect is also called as shielding effect. What does it mean? Suppose this is the atom we are having. So here, when you take an atom, you don't have electrons only in the outermost orbit. You'll be having electrons in the inner orbits also. You'll be having electrons in the inner orbits also. So here, जैसे inner orbit electrons बढ़ेंगे, they will act as screens. They will act as screens. एक partition के जैसा काम करेगा. Suppose कैमरा और मेरे बीच में एक partition है, एक curtain है, एक plank है. So you will not be able to see the board, is it not? So here also the electrons, they are inner electrons, जो electrons nucleus और outermost electron के बीच के electrons है, so they are acting as screens. They are acting as screens between the nucleus and outermost electron. So उसके वजह से क्या होता, nuclear charge outermost electron पे decrease हो जाता, क्योंकि जो electrons न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच में है, दे आर एक्टिंग एज स्क्रीन्स, वो लोग पार्टीशन के जैसा काम कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होता क्या होता, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस। इज इट नॉट स्टूडेंट्स? ओके, सो हाउ इट इज रिलेटेड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता। द नेक्स्ट, पेनिट्रेशन पावर। व्हेन यू टेक सपोज SPDF, ये न्यूक्लियस है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, और एक इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में से निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में निकालना है। कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ज्यादा एनर्जी डालने की जरूरत पड़ती है? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज ऑर्बिट में है उस पे आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती। फॉर एग्जांपल वी टेक s ऑर्बिटल, द नेक्स्ट p ऑर्बिटल, d f, सो एनर्जी आल्सो s is more than p is more than d is more than f। ओके, सो जैसा डिस्टेंस बढ़ता जाता अट्रैक्शन कम होता, एनर्जी भी कम होता, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में से निकालना है तो आपको ज्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा। The last factor is completely filled or half filled electronic configuration. Now suppose if you have nitrogen atom, इसका atomic number क्या है, 7 है, उसका configuration क्या है, 1s2 2s2 2p
3. Okay. So it is here. What is the capacity of p orbital? 6 electrons. पूरा फील्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स रहना. तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब हाफ फील्ड. हाफ फील्ड मतलब इज इट स्टेबल और अनस्टेबल? इट इज स्टेबल. इट इज स्टेबल. ओके. तो स्टेबल है. तो अगर आपको ऐसे ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको हाई एनर्जी डालना पड़ता, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ज्यादा रहता. उसका नेक्स्ट एलिमेंट ले लो, ऑक्सीजन. इसका एटॉमिक नंबर 8 है. कॉन्फिगरेशन क्या है इसका? 2s2 2p4 है. It is an incompletely filled orbital. Actually, when you move across the period, what happens? Nuclear charge increases, but there are some exceptions. नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले आया था, so नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कम होना चाहिए according to the rule. लेकिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन में completely half filled electronic configuration रहने की वजह से नाइट्रोजन का आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है compared to ऑक्सीजन. Then completely filled मतलब noble gases NS2 NP6. Okay. तो यहाँ पे फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उन लोगों को इलेक्ट्रॉन्स देना ही नहीं है. आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे तो क्या करना, आपको ज्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा. सो दीज आर द फैक्टर्स which are going to affect the ionization enthalpy. So atomic radius it is now. बच्चे क्या करते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा इंक्रीज है कौन सा डिक्रीज है. ओके. तो एटॉमिक रेडियस स्क्रीनिंग इफेक्ट्स क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एटॉमिक रेडियस स्क्रीनिंग इफेक्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है. सिमिलरली जब स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है. व्हाट अबाउट न्यूक्लियर चार्ज? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयनेशन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस. Then penetration power, as the penetration power increases, ionization enthalpy also increases. So the atoms, elements having completely filled or half electronic configuration will require more energy to remove the electron. Why? Because they are stable. Stable मतलब nucleus attraction is more. So आपको nuclear attraction ज्यादा है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज्यादा एनर्जी डालने की जरूरत पड़ेगी. So when the question, when they are asking to write any three, मतलब आप first three लिखना, last two छोटे है बोल के लिखे तो marks नहीं आते students. Please remember that. First three are very very important. So they are not mentioning the number, just they are asking write about the factors. All the factors you have to write. Just copy down this. So this is the very very important question from periodic classification. That is, what is ionization enthalpy 1, ionization enthalpy 2, why I2 is greater than IE1, what are the factors that are going to affect ionization enthalpy. Okay. The next we'll go to the second question. First I'll discuss this periodic one. Periodic properties. What are the various periodic properties? As I told you, 4 important properties are there. First is atomic radius. Atomic radius. Then second, ionization enthalpy. Already we have seen here. So एक बार फिर से easily recall कर सकते हैं. That's what I'm going to this question. Okay, students. Then third is electron affinity. Electron affinity. And the fourth one is electronegativity. So these are the 4 factors which you may get as the LAQ or SAQ. SAQ means they will mention what properties you have to give. SAQ matlab all the 4 they will give. First property is atomic radius. So what is the meaning of atomic radius?
the distance from the center of nucleus to the outermost orbit or till the electron cloud. जहां तक इलेक्ट्रॉन रहता न्यूक्लियस से, जहां तक इलेक्ट्रॉन रहता, that is called atomic radius, or the distance from the center of the nucleus to the outermost orbit is called as atomic radius. The distance from the center of nucleus, to the outermost orbits, to the outermost orbit. पहले आपको डेफिनेशन लिखना है स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको डेफिनेशन लिखनी है. उसके बाद आपको वेरिएशन देना है, मतलब ग्रुप में और पीरियड में कैसा चेंज होता. फर्स्ट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 1A ग्रुप. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ 1A ग्रुप? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, rubidium, cesium, francium. Any group you can take words, no problem. Okay. The next, here atomic number is 3, atomic number is 11, this is 19, 37 plus 55, then 87. Okay, these are the atomic numbers. Now when you are moving from one element to next element, for example, take lithium atom. This is lithium. How many orbits are there? Configuration क्या है? 1s2, 2s1. You take sodium. Is it not? When you are moving from one element to next element, the atomic number is increasing. Atomic number is increasing, matlab the number of electrons are increasing. When number of electrons are increases, what happens? The number of orbits also increases, the shells also increases. This is the case in the group. So on moving down the group, what happens to the atomic radius? Atomic radius को क्या होता? Suppose this is the lithium, sodium, potassium, rubidium, etc. So when you are moving down the group, the atomic radius is increasing. Atomic radius is increasing. Matlab when atomic radius is increasing, what is happening to the nuclear charge? Nuclear charge is decreasing. Nuclear charge is decreasing. मतलब nucleus का attraction जो है decrease होता जा रहा है. So when nuclear attraction decreases, what happens to ionization enthalpy? Ionization enthalpy also decreases. मतलब on moving down the group, जब आप ऊपर से नीचे आओगे, so on moving down the group, what happens? Atomic radius, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा? Increases. Atomic radius increase ना काफी है, no need to write the reason. Okay. The next, what is happening across the period? Periodic elements क्या है? For example, you have lithium. lithium के बाद क्या है? Beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, etc. So when you move across the period, write the configuration. So this is 1s2, 2s1, this is 2s2, this is 3s1, this is 3s2, 1 second. 2s2, this is 2p1. This is atomic number is 5, no? 1s2, 2s2, 2p1. So this is 2p2, this is 2p3, this is 2p4, this is 2p5. Okay. So when you move across the period, what is happening? The electron is going into the same orbit. Is it not, students? The atomic number is increasing. The number is increasing by 1 unit. This is 4. This is 3, 6, 7, 8, 9. So atomic number increasing by 1 unit, but the electron is going into the same orbit. Matlab nuclear charge increases across the period. When you move across the period, the nuclear charge increases. When nuclear charge increases, what happens to ionization enthalpy? It is also increases. Okay.
on moving across the period. Across the period, atomic radius decreases. Arrow pointing downwards, decreases due to increase in nuclear charge. Due to increase in nuclear charge. So if you write this much, you will get 2 marks. So definition is 1 mark and variation, group and period 1 mark. So total 1 periodic property carries 2 marks. Okay, students, please write down that. Done? Okay. The next property is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. The symbol for ionization enthalpy is IE. It is called as ionization enthalpy or ionization potential also we can call it. Now, what is the meaning of ionization enthalpy? पहला point क्या है, आपको definition लिखना है. The already we have done this. The minimum amount of energy. The minimum amount of energy required to remove most loosely held outermost electron from a gaseous neutral atom. Okay, this is called as ionization enthalpy. Now, what happens to ionization enthalpy when you move down the group? So, I'm taking 15th group elements, suppose nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, right? So, what is happening to the size of the atom? Size of the atom increases when you move down the group. Is it not? No. When the size increases, what happens to the nuclear charge? Nuclear charge decreases. जैसा distance बढ़ेगा, तो nucleus का attraction क्या होता है? outermost electron पे decrease होता है. Nuclear attraction decreases. So then you have to supply less energy. So ionization enthalpy decreases. So group में क्या होता? Group on moving down the group. On moving down the group, ionization enthalpy decreases. इसलिए due to decrease or due to increase in atomic radius. Due to decrease in increase in atomic radius. Okay. So on moving down the group, atomic radius is increasing. On moving down the group, atomic radius ionization enthalpy decreases. Why ionization enthalpy is decreasing? Because atomic radius increases. On moving down the group, atomic radius increases. Now, what happens across the period? So we have seen, suppose you take lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Okay,
इसमें एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s1, दिस इज 2s2, दिस इज 2p1, this is 2p2, 2p3, 2p4. So note out, when you are moving from one element to the next element, the atomic number is increasing by how many units? By 1 unit. Atomic number is increasing by 1 unit. But the electron is entering into the same orbit. The electron is entering into the same orbit. So because of that, what happens? Nuclear attraction increases. So when nuclear attraction increases, what happens? When nuclear attraction increases, ionization enthalpy also increases. Okay? This period में क्या हो रहा? PD is period on moving across the period. On moving across the period, ionization enthalpy increases. Okay? Ionization enthalpy increases due to increase in nuclear charge. Due to increase in nuclear charge. Okay, students, please copy down this. The second one, second periodic property, ionization enthalpy का definition और उसका variation in group and period. Variation मतलब वो कैसा change होता group में और period में. Please copy down this. The next is the third property. Third property can take electron affinity. Electron affinity. This is also called as electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Now, what is the meaning of gaining of electrons, accepting electrons? What elements will accept electrons? For example, non-metals. Okay. Ionization enthalpy is shown by the metals because metals are having tendency to donate electrons. यहाँ पे क्या है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एटम में, जितना एनर्जी रिलीज होता, that is called as electron affinity or electron gain enthalpy. इसका सिंबल क्या है? ये. Right. So which elements will accept electrons? Non-metals will accept electrons, right? So when the electron is added, when an electron is added to a gaseous neutral atom, as I told you, removal of electrons as well as addition of electrons will take place only in the gaseous stage. Is it not, students? आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, अगर ऐड करना चाहते हो, तो कौन सा स्टेट पे आप कर सकते हो? ओनली इन द गैसियस स्टेट. ओके, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन outermost orbit is called as electron gain enthalpy. Okay, now this electron gain enthalpy is directly proportional. It is directly proportional to non-metallic nature. It is directly proportional to non-metallic nature. मतलब जैसा non-metallic nature बढ़ेगा, electron affinity also increases. Now, how it is going to change in the group and period? So what happens to non-metallic nature in the group? In the group, non-metallic nature decreases. Non-metallic nature decreases. जब non-metallic nature decrease होता,
So what happens to the electron gain enthalpy? Decreases. So electron affinity or electron gain enthalpy decreases down the group. Decreases down the group. So why it is decreasing? Decreases down the group. Why it is so? क्योंकि ग्रुप में क्या होता, मेटालिक नेचर इंक्रीज होता या नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज होता. So due to इंक्रीज इन मेटालिक नेचर, कौन सा एक रीजन लिख सकते हो स्टूडेंट्स? दोनों भी लिखने की जरूरत नहीं. ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक नेचर आर डिक्रीज इन नॉन मेटालिक नेचर. कौन सा एक रीजन लिखे तो बस है, काफी है. ओके, दो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक नेचर, बिकॉज इन द ग्रुप व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मींस द मेटालिक नेचर इज इंक्रीजिंग. So when you move across the period, non-metallic nature increases. So therefore, non-metallic nature decreases in the group, whereas it increases across the period. Then, in the period, what happens? Electron affinity increases due to why? Increase in non-metallic nature. So when you move across the period, the non-metallic nature increases, means the tendency to accept electrons increases. So that is the reason electron affinity will increase across the period due to increase in non-metallic nature. Good morning. Okay, students. So this is about the electron affinity. Copy down fast. So the last factor is electronegativity. Electronegativity. So what is electronegativity? The tendency of an atom to attract the bonded pair of electrons towards itself. Is the tendency to attract the electrons is called as electronegativity. Now, this electronegativity we can represent in the form of symbol En. It is directly proportional to non-metallic nature. Directly proportional to non-metallic nature, whereas inversely proportional to metallic nature. This is directly proportional to non-metallic nature, inversely proportional to metallic nature. We know that non-metallic nature कहाँ पे increase होता? Period में increase होता. मतलब electronegativity will increase in the period. Where this metallic nature is increased? In the group. मतलब this electronegativity decreases in the group. So variation group में क्या होता? Electronegativity decreases due to increase in metallic nature. Metallic nature. Then period में क्या होता? Electronegativity increases due to increase in non-metallic nature. Due to increase in non-metallic nature. Okay, students. So these are the four factors, four periodic properties which you will be expecting in your exam, right? No. यहाँ पे क्या होता है, थोड़े स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज, क्योंकि चार प्रॉपर्टीज है, कौन सा इंक्रीज होता, कौन सा डिक्रीज होता है. वो बात तो ट्रिक क्या है? फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस इसमें, एटॉमिक रेडियस, देन ग्रुप पीरियड. ग्रुप में क्या होता? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता, पीरियड में डिक्रीज होता. Here it is increases, here it is decreases. Next,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में क्या होता, पीरियड में डिक्रीज होता, सॉरी ग्रुप में डिक्रीज होता, पीरियड में इंक्रीज होता. देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में डिक्रीज होगा, पीरियड में इंक्रीज होगा. देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में डिक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज होगा, पीरियड में इंक्रीज होगा. सिंपल है स्टूडेंट्स, देख लो ये तीन फैक्टर्स जो है दे आर शोइंग द सेम ट्रेंड. तीन फैक्टर्स जो है ग्रुप में डिक्रीज हो रहे, पीरियड में इंक्रीज हो रहे. सिर्फ एटॉमिक रेडियस इसका ऑपोजिट है. आप सिर्फ एटॉमिक रेडियस का पढ़ो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन द ग्रुप, डिक्रीज इन द पीरियड. बाकी का उसका ऑपोजिट हो गया ना आपका, नो कंफ्यूजन. दिस इज द ट्रिक टू रीड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. सिर्फ एटॉमिक रेडियस का पढ़ो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, बस पढ़ लिए. बाकी का उसका ऑपोजिट, मतलब ग्रुप में डिक्रीज होता, पीरियड में इंक्रीज होता. ऐसा पढ़े तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहता बॉयज. नहीं तो एटॉमिक रेडियस में ग्रुप में डिक्रीज लिखोगे, पीरियड में इंक्रीज लिखोगे, एक जैसा लिखोगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं रहना. मतलब आप लोगों को ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ोगे देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन. ओके स्टूडेंट, एंड प्लीज प्रैक्टिस दिस एलएक्यूज. आज 2 एलएक्यूज पढ़े हम लोग, 3 एलएक्यूज, 2.5 वी हैव रेड. सो क्वांटम नंबर्स कल का आधा था वो पढ़े, और आयनेशन एंथैल्पी पढ़े, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़े. ये लिख के प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार, जितने बार तक आपको परफेक्ट आंसर नहीं आता, जब तक लिख के प्रैक्टिस करो, देन ओनली यू कैन गेट द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का दूसरा मतलब क्या है, प्रैक्टिस. जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट गेट परफेक्शन इन योर आंसर्स. और एग्जाम में पूरा लिखते बोल के भरोसा नहीं रहता. तो पूरा प्रैक्टिस करो एंड थैंक यू.